was yet another successful chase for Islamabad United, and this time it was Fahim Ashraf hitting those winning runs, Azam Khan and him having that partnership once again. And in the end, they made it look easy. Islamabad United are the masters of the chase. Sarfraz Ahmed disappointed once again. It's been an overall disappointing season for Quetta Gladiators. Hello and welcome to Pitside. It's great to be back here. Islamabad United winning once again, and what a fantastic chase. They seem to be the best team in the HPL PSL when it comes to chasing. Let's not forget they have qualified for the playoffs. That is the big news today, and many congratulations to them. And because we're talking about Islamabad United, with me in my studio I've got somebody who is integral to the success of Islamabad United over the years. Shadab Khan ने हमें join किया है, साथ अरूज मुमताज है. Shadab, यानी अगर 300 भी टारगेट होगा तो इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर लेगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहीं, हम 90 पे भी ऑल आउट हुए हैं, वो भी ना बोले चेस करते हुए. नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए हमारी स्ट्रेंथ है, बैटिंग में डेप्थ है, तो उसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि चेजिंग पे जाएं. लेकिन जिस तरह के अभी हमारे इस साल डेप्थ है, ये हमारी बॉलिंग में भी अभी तक वैसे शो नहीं कर पाई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बॉलिंग ऐसी नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली इतना स्कोर खाए. अच्छा, एक पॉइंट ये था कि जब 180 कर लिया क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, और काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप्स भी थी. उमर अकमल ने भी स्कोर किया, उनकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन थी, ज़ादरान थे. तो उस वक्त जब हुआ हाफ टाइम पे मोमेंटम लग रहा था शायद क्वेटा के पास चला गया, बट क्या डिस्कशन हुई उस ब्रेक में? आपने क्या कहा लड़कों को? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार स्कोर है 196. एक तो आपने चेयर ऐसी लगाई, मैं घूम ही जा रहा हूँ. ये मैंने नहीं लगाई, आपने नहीं लगाई. 196 पार स्कोर है, और लेकिन मुझे लगता है जिस तरह का हमारा स्टार्ट हुआ था इतना स्कोर होना नहीं चाहिए था. उसमें भी मेन रीज़न मेरे ख्याल से मेरी बॉलिंग थी, क्योंकि एज ए लेग स्पिनर आपको मिडल ओवर्स में आउट करने चाहिए, और वो मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से उनको वो सेट हो के आपको जब भी आप डेथ ओवर में जाएंगे, सेट बैट्समैन जाएगा तो वो बहुत डेंजरस होता है. वैसे भी रोज आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्या चीज़ अभी तक अच्छी लगी है, जितना भी आपने HPL PSL देखा? खेलते हुए मुस्कुराते हैं, एंजॉय करते हैं. ऑनेस्टली आई डोंट नो इफ इट इज़ ट्रू, बट एटलीस्ट इट अपीयर्स टू बी. लगता है ऐसे ही कि जब भी अपनी क्रिकेट खेलते हैं एंजॉय करते हैं, और उसकी रीज़न है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को वो सेफ्टी नेट या कुशन दिया हुआ है कि जाएं और अपनी गेम खेलें, हम आपको बैक करेंगे. तो वो जो फियर ऑफ फेलियर का एलिमेंट है वो प्रॉबेबली बाकी टीमों के मुकाबले में इनकी टीम में प्रॉब्ली उतना नजर नहीं आता. शायद आप प्रॉब्ली कंफर्म कर सकते हैं इस बात को, बट बज़ाहिर लगता है ऐसा ज़रूर है कि आप लोग एंजॉय करते हैं. डेफिनेटली. देखिए, मैं उनसे जो एज ए कैप्टन मेरी सिर्फ उनसे ये डिमांड होती है कि आपने इंटेंसिटी जो आपकी है वो लो नहीं होनी चाहिए. उसके अलावा क्योंकि हम फेयरलेस अप्रोच के साथ खेलते हैं, तो उसमें फेलियर्स भी आएंगे. जिस तरह आपने देखा कि हम 90 पे ऑल आउट हुए हैं, और मैं पिछले साल से ये बात कर रहा था कि हम जिस तरह खेलते हैं कोई ऐसा मैच आएगा जिसमें हम 100 पे ऑल टीम आउट हो जाएगी, लेकिन हम उस चीज़ को बैक करते हैं. हम फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम स्मार्ट क्रिकेट भी आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा नहीं खेलते, लेकिन जब भी हम खेलते हैं तो उसके बाद ये रिज़ल्ट आ ही जाता है. क्योंकि जिस तरह की आज पार्टनरशिप हुई है, आज़म ने अपनी गेम चेंज की, फ़हीम ने अपनी गेम चेंज की, क्योंकि हमें पार्टनरशिप चाहिए थी वहाँ पे. और उन्होंने हमेशा स्पेशली मैं फ़हीम की जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो एंकर रोल होता है हमेशा फ़हीम ही निभाता है. और मैंने उससे जब मैच ख़त्म भी हुआ, मैंने उससे कहा कि यार सॉरी, क्योंकि हमेशा हम तुझे ना प्रेशर सिचुएशन में ऐसी बैटिंग देते. ज़ैनब, वैसे एक बात है, जो भी इस कुर्सी में आके बैठते काफ़ी स्मार्ट बातें करना शुरू कर देता है. मतलब स्मार्ट क्रिकेट के साथ आप लोग स्मार्ट बातें भी करना शुरू कर दिए आप लोगों ने. अच्छा, वैसे ये बताएं कि शादी के बाद जो आपको सुबह से आपने कोई शादी का एंगल पहले बाजी के पीछे लगी हुई थी. शादी की हर चीज, शादी का ताल्लुक नहीं है इस बात से. शादी का शादी कोई ताल्लुक नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. स्टोरी डन. अच्छा, ये बताएं कि आप लोग जिस अग्रेसिव अप्रोच और माइंडसेट की बात करते हैं, उस किस्म के प्लेयर्स भी होना ज़रूरी हैं. कितना एज अ कहते हैं ग्रुप कह लें, जो आप लोगों का डिसीजन मेकिंग ग्रुप है, ऐसे प्लेयर्स होना कितना फ़ायदा? क्योंकि माइंडसेट की, अप्रोच की, अग्रेसिव इंटेंट की कितनी भी बात कर लें, अगर वैसे प्लेयर मौजूद ना हो जो उस माइंडसेट को समझें या उसको एक्सेप्ट करें, तो कितना मुश्किल हो जाएगा. डेफिनेटली. लेकिन मेरे ख्याल से ये मैनेजमेंट का और जो कैप्टन का रोल होता है इसमें बहुत अहम किरदार होता है. जो हमारी अप्रोच है उस हिसाब से हम, वैसे तो प्लेयर हम वो उसी हिसाब से लेते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल से एज ए नेशन हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं. अगर हमें वो जो अग्रेसिव हैं, वो जो हम अंदर से हैं, वो हम बाहर भी निकालना चाहते हैं, तो हमारे प्लेयर से यही बात होती है. क्योंकि एज ए नेशन हमारी
मोस्टली 95% हम एग्रेसिव लोग हैं, तो जो चीज़ हमारे में नेचुरली आई हुई है तो वो हम कोशिश करते हैं कि वो अप्लाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जो प्लेयर का होता है, जो कंसर्न होता है, उसका मेन कंसर्न ये होता है कि जब वो फेल होगा तो उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और कोई ऐसा टूर्नामेंट होगा जैसे जिस तरह पॉसिबल है कि अगर हम अगला टूर्नामेंट ऐसा खेलते हैं तो उसमें शायद हमारी पूरी टीम ऐसा परफॉर्म ना करे, लेकिन स्टिल हम उसको बैक करेंगे, क्योंकि जब आपने एक चीज़ डिमांड कर रहे हैं किसी से भी, उसमें फेलियर तो आएंगे। जिस तरह इंग्लैंड की टीम करती है। डेफिनेटली आप जो चीज़ आप अगर किसी प्लेयर को, जिस प्लेयर का स्ट्राइक रेट 70 है लेकिन उसकी एवरेज 60 है, अगर आप उसको कहोगे आप स्ट्राइक रेट 95 पे लेके जाओगे, डेफिनेटली उसकी एवरेज कम आएगी, क्योंकि वो अपनी टेक्निक चेंज करेगा, वो चांसेस ज़्यादा लेगा, उसमें आउट होने के काफ़ी चांसेस हैं। लेकिन हम लोग फिर एट द एंड ऑफ द डे एज ए नेशन हम परफॉर्मेंस भी मांगते हैं और हम मॉडर्न डे क्रिकेट भी मांगते हैं। अच्छा, हसन अली की काफी शिकवा है, वो कह रहे हैं जब से इसके पास शादी हुई है इसके पास टाइम ही नहीं है हमें देने के लिए। वैसे ये बात सच है। मतलब आपने, वो कहते हैं ना शादी के बाद इंसान बदल जाता है, तो आप तो रोटी गैंग से एग्जिट हो गए बेचारा। आपने एक महीने में ही आपने आपके तेवर बदल गए। सीरियस जवाब देने लगा है। नहीं, मैं सीरियस वैसे देने लगा था, बहुत अच्छा जवाब था, लेकिन मैंने ना अभी आपको दिया नहीं दे बता दे, ये आपका शो है, आप बता दे। यही तो जवाब चाहिए। नहीं, ये वाला जवाब सच बात नहीं। वैसे हर बात शादी पे क्यों आ रही है? आई एग्री। क्योंकि अभी मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, इसका मतलब मेरी शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो नहीं हो रही। अब इंसान को शादी भी नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगा, आपने जब शादी किया, शादी के बाद आपको ज्यादा तरक्की? मेरी परफॉर्मेंस तो और अच्छी होगी। अच्छी हुई ना, शादी के बाद परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। मेरी तो हर तरीके से बहनों और भाइयों, ये क्रिकेट का शो है। मैं वही कह रहा हूँ, क्रिकेट का शो है, क्रिकेट की बात करें, मैं परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, वो बात करें। उनकी उंगली में मसला है, बता दें आप। नहीं, उंगली में आप आपने कहा नहीं, आपने उस दिन कहा था कि ऑन अ सीरियस नोट, उस दिन आपने कहा था कि इट इज नॉट 100%। नहीं, स्टिल इट्स नॉट 100%, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल मेरी रिकवर हो चुकी है। लेकिन मेरी जो फिजियो से बात हुई है, वो थोड़ा सा पेन, और क्योंकि आप फील्डिंग करते हो तो आपको हमेशा उसी हैंड पे, मेरा वही राइट हैंड है, उस पर बॉल लगता है, और बैटिंग में अगर जो कि मेरा नहीं हो रहा, हर टाइम बॉटम या स्टिकर पे बॉल लगे तो उस टाइम भी दर्द होता है, मिडल नहीं हो रहा तो उस टाइम भी थोड़ा सा होता है। लेकिन रिकवर हो चुकी है, लेकिन वो टाइम लेगी, क्योंकि मैंने एक तो प्रैक्टिस में नहीं था, मेरे ख्याल से 1.5 मंथ मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आके PSL खेले, कोई प्रैक्टिस नहीं की। वो वजह भी मैंने तो ये सोचा था जब आप प्रैक्टिस नहीं करते ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हो लेकिन वैसा हुआ नहीं है। लेकिन स्टिल अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, टूर्नामेंट में अभी काफ़ी लंबा है। चले, थैंक यू शादाब सो मच आपके टाइम का। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और हम बिरयानी खाने आएंगे। नहीं, वैसे शादी की बिरयानी खाने। ये आप बता दें कि शादी का सवाल हमेशा नहीं होना। शादी में बुलाया नहीं? आपको नहीं बुलाया था? कितनी बुरी बात है। नहीं, मेरे पास आपका नंबर नहीं था। मैंने जिसको मैंने बुलाया वो आई नहीं थी और उसने सलामी भी नहीं दी अभी तक। सलामी रखी। अच्छा, मगर वैसे गलत बात है ना? नहीं, आपको नहीं बुलाया, आपने मुझे नहीं बुलाया। नहीं, आपका खाना इनको नहीं बुलाया, जिसको मैंने बुलाया वो आए भी नहीं, सलामी भी नहीं दी, और बातें भी सिर्फ शादी की हो रही हैं। आपकी फैमिली ने हमें बिरयानी की दावत दे दी है, हमारी फैमिली तो आ रहे हैं बिरयानी खाने। हमें नहीं पता आप बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे, बट थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग। हम हंसी मजाक तो करते रहते हैं, बट वी एक्चुअली वांट कि आप वापस अपने उसी तरह फॉर्म में आए जिस तरह से हम आपको देखते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, एंड इतना अच्छा चल रहा है कि कोई भी टारगेट दे दे तो दे कैन चेज इट डाउन। पिछले मैच में ओवर 200, इसमें भी जो है अच्छा उन्होंने चेज किया। फहीम अशरफ, हर बंदा अपना रोल निभा रहा है। मेरे अलावा। Anyway, on that note, we'll take a short break. We'll be back just in a bit. Islamabad United finding their mojo just at the right time. They're winning mojo. I would say that they've won the last few games, and more importantly, they have now qualified once again. So congratulations to them. And Shadab Khan, पहले Shadab Khan आए हुए थे, अब हमें join किया है बाजिद खान ने. So लग रहा है कि खान जी खान हैं स्टूडियो में. अरूज मुमताज खान, बाजिद खान, शादाब खान, कालाज़म खान था. So it's been the Khan show so far. चलें अब आगे बढ़ते हैं. बाजिद has a huge smile on his face. बाजिद, इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोई भी टारगेट अपन दे रहे थे, कोई भी टारगेट दे दो तो वो चेस कर लेते हैं, बट पिछले मैच में आजम खान
nearly single-handedly won it for them. लेकिन इस मैच में अगर देखा जाए आजम खान थे, but then फहीम अशरफ ने जो innings खेली, that was also crucial. ये तो आप कह रही हैं कि हर टारगेट चेज कर जाते हैं, लेकिन दे हैव दी ऑल्सो द टैलेंट टू इम्प्लोड. आपने एक मैच में देख चुके हैं कि 10-12 ओवर में ये आउट हो गए थे. आज भी ऐसे लगा था कि शायद दे विल इम्प्लोड. अगेन फ़हीम अशरफ एंड आज़म बोथ इन फॉर्म. वो उनकी पार्टनरशिप की वजह से वो जीत गए. यस, बट आई थिंक दिस डिफीट विल हर्ट क्वेटा अ लॉट, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी in lot of phases of the game to win the game. I think there's maybe a lack of bowling quality, and also maybe a lack of firepower in the batting after that start to get to 180, and then you have that opportunity where there's a big collapse. Uske baad bhi wo match haar jate hain. So I think out of all the defeats that they've had in this HPL PSL 8, this will probably hurt the most. क्योंकि एक पॉइंट पे लग रहा था रूज के मैच बन गया है कोयटा के लिए जब नवाज विकेटें ले रहे थे. उमैद आसिफ started chipping in with wickets and it seemed like they needed 31 and 18 और लग रहा था कि शायद काफ़ी हद तक कोयटा ने कंट्रोल में रखा है. बट ये भी नज़र आ रहा था दूसरे एंड पे कौन से बल्लेबाज हैं. तो डिसअपॉइंटिंग फॉर कोयटा. आई थिंक दे प्रीटी मच डन. दे हैड 2 अपॉर्चुनिटीज. उस दिन लाहौर को भी पावर प्ले में 4 आउट करने के बाद 148 तक वो स्कोर चला गया, उसको वो डिफेंड नहीं कर सके वहाँ से. सो ऑल ऑफ इट हैपेंस फॉर देम. जस्ट कहते हैं ना, क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर दे कांट गेट देमसेल्व्स ओवर द लाइन. दे फाइंड वेज टू लूज ऑलमोस्ट. तो वो एक अजीब सा, और बार बार हम ये बात करें कि ऑन पेपर देव गॉट द नेम्स, समथिंग हैजंट क्लिक्ड फॉर देम, which is also case of inconsistency. बहुत ज़्यादा consistency रही है in terms of batting orders. Commentary में बात भी हो रही थी कि सरफराज himself 3, 4, 5, 8 ये नंबर्स पे बैटिंग कर चुके हैं. टॉप ऑर्डर को चेंज कर चुके हैं. मार्टिन गप्टिल जिन्होंने 100 किया वो आज बाहर बैठे हैं. जेसन रॉय चले गए. सो ऑल ऑफ दैट कम्स डाउन टू प्रॉबली अ लिटिल बिट ऑफ पैनिक. एंड जब जीत की तरफ आप नहीं जा रहे होते और टीम नहीं जीत रही होती, कंसिस्टेंटली हारती है, तो इस किस्म की सिचुएशंस में भी यू मेक अ मेस आउट ऑफ इट. It's almost like you forget how to win. Winning is also a habit, and Islamabad United seems to be making a good habit out of winning. Fahim Ashraf आज जो थे बहुत he was the star of the show today. जिस तरह से उन्होंने finish किया for Islamabad United, he's also our master blaster. Yeah, we see all his boundaries, but in between the partnership which he set with Azam was crucial. Look at 39 of 31, it doesn't jump at you. Lekin it was such an important innings and such important to hit those 3 boundaries at the end. We talk about the depth that Islamabad United has in their batting and also the firepower that they have, the kind of players who can execute the shots that we've been talking about. But because we're talking about their firepower, it's time for the stat attack today. And this is in front of you. 7 matches, Islamabad United, 66s for Islamabad United. Aruj, जिस तरह आपने कहा कि उनके पास वो प्लेयर्स भी हैं जो कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अभी जो एक डिस्कशन हो रही थी, तो उनके पास वो प्लेयर्स भी हैं जो छक्के मार सकते हैं. इनमें से आधे तो आजम के ही होंगे अकेले. मतलब जितने सारे वो छक्के मारते हैं. बट जिस तरह हम सब बात करें कि हेल्स, मनरो, गुरबाज, रैसी वैंडर डसन, आजम खान, आसिफ अली, इट्स रिलेंटलेस, इट्स कंटिन्यूअस. एंड जिस तरह शादाब ने जो आज एक बात कही, विच वाज आल्सो द केस, कि दे आर आल्सो स्मार्ट अबाउट इट. आज जो बाजिद भी बात करेंगे, दे हैड दिस थिंग ऑफ इम्प्लोडिंग. शादाब ने भी कहा कि एक मैच में हम 90 पे ऑल आउट भी हो चुके हैं, क्योंकि वो उनका खेलने का तरीका उस तरह से कि इट कैन गो ऑल रॉन्ग ऑल्सो वेरी क्विकली. बट इन स्पाइट ऑफ दैट, आजम ने और फहीम ने जिस तरह से आज स्मार्ट खेला, कि उनको मालूम था कि मे बी 8 रन रिक्वायर्ड थे, तो दे टुक देयर टाइम टू गेट इन. और आखिर में आजम खान डिड आजम खान थिंग्स. Azam Khan did Azam Khan things and Islamabad United did Islamabad United things. That was the stat attack for you. बॉलिंग जो थी आज, जिस तरह से शुरुआत हुई, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इनिशियल विकेट्स देखने को मिली कि जिस तरह की गिरी. एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आज कौन से स्टार प्लेयर्स थे, देयर वाज अनदर स्टार प्लेयर एट डिस्प्ले. वी आर टॉकिंग अबाउट फजल हक फारूकी, हु इज आल्सो आवर प्लेयर ऑफ द मैच.
It's been the season for left arm swing bowlers up front. पहले ओवर में विकेट, उसके बाद थोड़ा पिच में बॉल भी मारा, सीम भी stood up the seam, और उसके बाद again short ball after the ball stopped swinging, he pulled his length back. Yeah, they didn't concede a single boundary in the power play. Bazid, एक सवाल, फहीम अशरफ जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जो नजर आ रहा है, the kind of shots that he has the ability to hit, जो एक रोल हम कहते हैं कि फिनिशर का, वैसे भी मतलब I know it's a different format, but टेस्ट मैचेस में भी हमने देखा है कि वो बैटिंग कर लेते हैं. आपको लगता है कि वो जो एक T20 वर्ल्ड कप की हमारी टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया गई थी, उसमें उनको होना चाहिए? बिकॉज उस वक्त एक डिबेट चल रही थी कि शायद फहीम को, आई नो नाउ इट्स टू लेट, बट एक ओपिनियन जो है मैं जानना चाह रही हूँ कि डू यू थिंक कि ही शुड बी अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान साइड? Look, if you उसमें अगर आप फहीम को डालते हैं, then you have to drop a bowler, और पाकिस्तान were winning the games because of their bowling on pitches that weren't flat pitches. He's maybe your sixth bowler, और ऐसे टूर्नामेंट में, especially PSL टूर्नामेंट में, आपको you'll get very few pitches which will assist the bowler. So his utility then lessens a lot. Test matches में, I think overseas tours, you still have to look at him. You've not got a lot of fast bowling all-rounders, so he adds balance to the team with runs and with the ball. लेकिन आप T20 में आप एक बात उस वक्त आप ज़रूर कर सकते हैं कि I think initial squad में आज़म खान था, उसको फिर लेके नहीं गए. चलो इस तरह तो फिर बहुत से प्लेयर्स वही डिस्कशन हो जाती है कि इसको नहीं लेके गए, उसको नहीं लेके गए, बट खैर एनीवे फहीम अशरफ का ख्याल आया बिकॉज उन्होंने परफॉर्म भी किया. थैंक यू सो मच अरूज फॉर जॉइनिंग अस. हम आपको इजाजत देंगे कि अब आप जा सकती हैं. थैंक यू. और बाद में पूछ लें शादाब खान ने आपको क्यों नहीं इनवाइट किया. ये अभी वहीं जा रही हूँ मैं, वहीं जा रही हूँ पूछने के लिए कि भाई जरा बताएं क्यों नहीं इनवाइट किया और आप गई क्यों नहीं, वो भी आप बता दें ताकि सलामी रखी हुई है मैंने, उसकी सलामी रखी हुई. Jale, on that note, we'll take a short break. Arooj is leaving us, but we'll be joined by Darren Ganga after the break. Back on the pitch side show, a magnificent display by Islamabad United. Now we saw Azam Khan was the man of the match in that previous game, and he led that chase wonderfully for Islamabad United. Today also, he played an extremely crucial role, but you've got to say that today's innings was slightly more different. And I think to talk more about that, I've got with me Darren Ganga, who joins us in the studio in Pindi for the first time. DG, welcome. Welcome to Pindi, firstly. Thank you. It's great to be here. It's a little bit cooler than Lahore, but I'm enjoying it. The Sherwanis must be keeping you warm, though. Yeah, thanks to Bazid Khan. I'm copying him. I'm trying to get style like him, you know. Really? Following his footsteps. I think you might want to think about that again. You're going down a dark hole. Anyway, let's talk about the cricket then. So Azam Khan, we're talking about Azam Khan and how integral he's been to Islamabad United. That previous game in which they were chasing over 200 runs, the kind of innings he played, today was a different kind of an innings because he sort of built it up and then he went all guns blazing. I mean, what do you like about Azam Khan personally? Well, I think it showed that he has situational awareness. He's not just playing one style of cricket. I think he's built up a great amount of cricket intelligence over the years, not just playing in Pakistan, but outside of Pakistan as well in different T20 leagues. And he's showing that maturity in situations for his team. I'd say it now, Islamabad United is the best chasing side in HBL PSL Edition 8. And he's an integral part of that strength that this franchise team has. We know that he has the ability to dominate spin. What he's showing in this edition of the HBL PSL is his ability to dominate pace. And now he's fusing all that ability with the situation that he confronts. So that's why you're seeing a different styled innings against Karachi Kings, a swashbuckling half-century. And now he was able to just measure the situation, show more control, and he delivered for his team. Unfortunately, he got out in the end, but by that time, the game had already been won by Islamabad United. Yeah, it's almost like he sort of switched gears in the end, but built his innings nicely at the beginning. Like DG said, we also had Nick Knight earlier on in the studio talk about this, that he seems to have a good head above his shoulders. He seems to have
grown mature over that last 1 year and is now playing pace equally well as spin, which is why he's basically featuring in our switched on moment of the day. We talked about this previous game as well, that I feel that it was the most mature innings that I've ever played. But he has all the shots, we know that, and he can bring them to the party as he wants. I think the main debate now when it comes to Azam Khan, when you talk about him, DG, or well, the most asked question in Pakistan right now is that, is he fit enough to be in that national side? Because there are two sides to that debate. Either you're on the side where you're for Azam Khan because of the skill that he possesses, and then there's the other side which is talking about setting those standards of culture and fitness. Which side of the fence are you on? I think it has to be with what the sort of minimum standards are for Pakistan's cricket when it comes to fitness. Being match fit and cricket fit, it's different to being physically fit. I think once players are able to show that they can consistently perform and dominate at the international level, you've got to meet that player halfway and maybe set small goals to get them to where you want them to be. But you can't deny a player with such immense ability the opportunity to play international cricket. And I think Azam Khan has had the opportunity to play for Pakistan, minimal opportunity, but he's proving to the Pakistan selectors, to the Pakistan public and to the world that he is able to play at the international level and dominate. So hopefully he will get an opportunity and he will recognize that there's work to be done in terms of his fitness to increase his agility, maybe get better habits when it comes to his diet and nutrition and his work towards becoming fitter as his career progresses. Baz, quickly, just before we move on to the next fall of wickets, we're talking about which side of the fence you're on in this debate. How many players do you know around the world who are in that category but play for their national side? I mean, any names that come on top of your head that you feel are purely there because of their skill, but perhaps lack in that department of fitness? Well, I think that the problem here is that the top sides are very fit. The top sides have that culture. The top sides have match winners, and they can afford to drop match winners who aren't getting to that level. I don't think that Pakistan has too many match winners per se in T20 cricket. I don't think you have batters who can change the game so drastically as Azam Khan does. So now the debate lies, do you compromise on the winning chances of Pakistan in a T20 tournament, in a big T20 World Cup, on being so severe on fitness, which again that's something that has to be looked from the very basic sort of down up, from lower levels towards the national side. Yeah, you could argue that you give him leeway, you don't give others leeway, but that's the way it is. Inzamam Haq was a world-class player. Even then, you wouldn't say he was electric in the field, but his skill outshone everything. It's the one sport where you have enough skill, you can cover up on fitness and all those other things. Yeah, we're talking about, this is quite an interesting debate. You know, no matter which side of the fence you're on. And we've also seen a lot of players, they've gone fitter, but then they've lost their game as well. There are quite a few examples that we've seen, at least in Pakistan cricket. On that note, let's have a look at the fall of wickets for Quetta Gladiators. Well, they struggled with their batting all season. The first wickets going down in that first over. Islamabad United was quite rampant with the ball. They picked up 4 wickets in quick time. Captain Safraz promoted himself to number 3 and he felt a brilliant catch on the boundary line and they were in dire straits. Fikar Ahmed trying to pour one wide of mid-on, he held out, but it was the partnership of Najibullah Zadran that really kept them in the hunt. When he fell, they were in a solid position and the wicket stumbled, but they had a score that they could work with. All right, we've seen a lot of paces on display today. Naseem Shah seems to be one of them
who's got his pace up always. No matter what the situation, he features in our fastest delivery of the day. Well, if there's one thing that Quetta Gladiators was known for before the competition, it was their pace to win. Naseem Shah is quick. He's right up there when it comes to one of the fastest bowlers in the world. And today was no different for him. 146.3, the first delivery. Well, we saw a brilliant catch in that previous game, and we've seen some brilliant ones. It has become better as the tournament has progressed. There were a couple of dollies that were dropped in the Karachi leg, a lot of questions around dew and how it was perhaps difficult under lights. But today we've got a special one by Mubashir Khan. Let's have a look in safe hands. This was really good because it was timed superbly. It went flat to him, but the ability to time the jump perfectly and then make sure that he kept in the playing area. That is fantastic catch. So for us, well, he played a good shot and he'd be annoyed that he got out to such a catch. All right, Islamabad United on the winning note today, ending on a winning note today. All smiles from them. They seem to be a very happy bunch. That's the one thing that we all love about Islamabad United, that they seem to enjoy their cricket and they seem to gel together really well as a side. Another time for another breather, and we'll be back just in a bit. Well, one thing is for sure, the Islamabad fans are happy. They are excited about the fact that their team is doing well. And it's been a treat for all the Pindi fans that have been coming to Pindi Cricket Stadium and watching their home side. In that previous game, over 200 runs were chased. Even today, the way they came back, I can tell you that they'll be a happy bunch. And because we're talking about the fans, it's time to hear their thoughts now. जी मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि उसमें मेरे फेवरेट प्लेयर हैं शादाब खान और आजम खान, और देख लें आपके सामने बहुत अच्छा मैच हुआ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ है लेकिन इस्लामाबाद जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैच देखने आए थे जी, बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे थे। और जो आपने पूछा क्यों, वो इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है ना, वो सबका आपस में फ्रेंडली माहौल है। सब मतलब शादाब ने सबको आपस में फ्रेंडली रखा हुआ है। हसन हो गया, जैसे वो नए उस अब मुबस्सिर है, उसको भी चांस दिया, उसको भी फ्रेंडली माहौल में रखा हुआ है। आजिम है, मतलब उसने सारे प्लेयर्स को ना एकदम से यूनाइटेड करके रखा हुआ है। टारगेट की नज़र देखा जाए तो काफ़ी अच्छा टारगेट था। क्वेटा की तरफ से एक मतलब डिफेंडेबल टारगेट कहा जा सकता था, लेकिन इस्लामाबाद में पावर प्ले में जो हिटिंग की और जिस रन रेट के मुताबिक वो स्कोर लेके गए, तो पावर प्ले के बाद तकरीबन मैच एंड ही हो चुका था। लेकिन उसके बाद अगेन क्वेटा ने प्रेशर डाला, विकेट ली। आजम खान खड़े हुए थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैच जिताए हैं। जितने भी मैच आप पीछे देखेंगे उन्होंने बहुत टीम को साथ लेके चले। मेरे फेवरेट प्लेयर बन गए इस टाइम शादाब खान, आजम खान, तो इस वजह से जनाब वो मुझे उम्मीद थी कि आपके सामने फिर उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ सिंगले डबले ला के लेते नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 ओवर बीच में रोक के सिंगले डबले करके उन्होंने जो है ना मैच को अपने नाम जो है ना किया। अगर बोर्ड पे इससे 10 या 15 स्कोर ऊपर होते तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कोयटा के जीतने के। जितनी तारीफ की जाए यहाँ पे आजम खान और फ़हीम अशरफ की, फ़हीम अशरफ ने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाई और बहुत अच्छा कमबैक किया। आई लव इट। Well, he loves it, but Quetta is not loving it right now. I mean, that's the thing for Quetta Gladiators. When you look at their performance, DG, their fans are going to be bitterly disappointed because it's another season that's been disappointing for them. Last season, their performance was also a letdown. Where do you think they've gone wrong? Well, it's been a tale of two halves pretty much. It started this HBL PSL journey doing very well in the first 4 years with a win rate of about 60%, and then it's gone downhill. I spoke to Safraz Ahmed at the toss and I asked him if the challenge was a different one as compared to 2019 when they won the title, and he said this is the best HBL PSL that he's played in terms of the quality of cricket. So I just feel that their baton has not clicked.
their opening pair has not delivered and laid a good platform for them to consistently score runs. You look at their bowling and you say generally their fast bowlers have gone well. Maybe Odin Smith is the only one that is not showing that sort of adaptability to change his lengths at different times. But I was very impressed with Mohammad Nawaz today, the way he bowled. We know that this pitch is very difficult for spinners, and he was able to bowl, what, 2 for 17? You know, picking up those wickets and bowling in the middle phase with such good control and variations with pace and lengths. Those are positives that you can build upon. It's so unfortunate that they were not able to cross the line. I feel this side on paper is still a very good side, but they need to just get those few little components firing, and they can get back to winning ways. As you mentioned earlier in the show, winning is a habit, so too losing is. Losing is a habit as well, winning is a habit as well. Sarfraz Ahmed, though, is one captain who looked very disappointed, and rightly so, today in the post-match interview that we had with him. And because we're talking about him, he features in our Masalaydar moments of the day. It's been quite a record actually. Sarfraz Ahmed has not missed a single HPL PSL game so far. Yes, we're talking about 8 years, always animated, and here pretty frustrated, and rightly so. All right, gentlemen, thank you so much. You can start smiling now because it's time to go home for you guys. But let's have a closer look at the points table once more to see where the teams are standing right now. Where is Islamabad United after this win? Well, they're right behind Lahore Qalandars. They are on 10 points because they won 5 of the 7 that they played. Quetta Gladiators, they still have a mathematical chance. If that's any solace for all the Quetta fans that are watching, it's going to be one difficult chance. But just to let you know that they're not completely out of the competition, but it's going to be tough for them. 6 of the 7 games that they've played, they've lost all of them. Right, they're up against Karachi Kings once again tomorrow in match number 22. Quetta Gladiators up against Imad Wasim's Karachi Kings. Both these sides, they need to get their act together. One thing is for sure from both of them, we haven't really seen the kind of performances that one would expect. I'm sure the fans also will be looking for both the sides to redeem themselves in tomorrow's encounter. From us, from here, until next time, it's goodbye, but we'll leave you with some super moments.